Hello friends, welcome once again. In this topic, we will continue with the previous series that we started, that is low self-esteem. We will take the part 2 of it. If you have not already seen part 1, I'll suggest you to watch that just to refresh what was covered in the part 1. We saw the understanding, we try to understand the word self-esteem. It is the person's overall subjective evaluation of their own worth or value. It is a belief that how much you appreciate and like yourself, regardless of the circumstances or failures that you've experienced, and how fast you are able to bounce back. So that elements of faith in oneself and your ability to appreciate yourself in spite of whatever be your circumstances or the achievements or failures. And we also saw at a cursory level that the low self esteem leads to a feeling of incompetence, worthlessness, and a lack of confidence in a person. It affects your ability to function effectively in any domain of life, be it personal life, professional life, social life, cultural life, or whatever. It affects all domain. So, in this video lecture, we will take it at a deeper level, the common observable effects of low self esteem, both on males and females. And there are a couple of large, in fact, not couple, there are quite a bit of points, and we will cover all of them one by one in case we find these videos are helping you, because here the aim is to exactly identify the areas that we have to work and develop before we claim ourselves to be bridging the gap that between the expected level of performance and our present level of performance. So let us see the common effects of low self-esteem. Now before I start, I have an important announcement to make. Please pay attention. The announcement is that on 15th January 2000 or 2022, that is Saturday, from 9 a.m. onwards, we'll have a 2-hour live session, and the topic that will be covered is right strategy to prepare for the SSB interview. Here we will cover why this 5 days SSB procedure is there, why there are 3 people, psychologist, interviewing officer, and the GTO. What are these tools? Psychological test case, Mansa, Vacha, Karmana. What are these 4 factors? Factor 1, factor 2, factor 3, factor 4. What each factor implies, and what are those 15 qualities within those 4 factors? And as part of your preparation, how do you need to prepare? Can you superficially build up these OLQs? Like there are people who say, come to us, we will help you develop OLQ. Can these OLQ be directly developed, or they are part of some other, personality development process that begins with your while you're in the mother's womb? It's got a long process. So what are the various elements, and then what are the major flaws, and what is the difference between academic test and psychological test? Psychological test में testing tool के ऊपर overly prepare करने से what are the damages, and what is the right approach, what are the major reasons for failures in the SSB performance. We'll see a whole lot of things. There is again a request from 2-3 people ki sir cover must know stuff. I don't think I'll be able to accommodate that here, because this session is very specifically for a long-term preparation. Those people who have about 6 months or 1 year, how do they go about it? Even for people who are self-preparing, I will suggest you it will be a good investment to come and attend it. So it is on 15 January 2022 from 9 a.m. onwards. So to register, you have to go to courses.ganeshbabu.in, and the link is given in the description box. You can click there, go there, and do the registration formalities. If you need any assistance, or even if you wish to register for the regular 2 weeks oblique 4 weeks SML or SSB or composite batch, you can WhatsApp me at 9090099035. So that was the announcement. Now let's come back to the common observed impact or effects of low self-esteem. First is negative feeling. I'll not cover them in detail right now. I'll list out them, then we'll take one by one. Negative feeling, overthinking.
So when you're low self-esteem, get into overthinking mode, excessive experience of stress, and thus reduce efficiency. सेल्फ लोथिंग, अपने आप को ही नीचा दिखाना, नीचा सोचना और अपने आप को ही हीन भावना से नीचे खींचते रहना. बिलीविंग यू हैव नथिंग टू ऑफर, एक ऐसा विश्वास कि आपके अंदर कुछ योग्यता नहीं किसी चीज़ में भी योगदान करने का. डिफ़िकल्टी गेटिंग मोटिवेटेड इंटरनली, लैक ऑफ मोटिवेशन, किक स्टार्ट बन जाते हो, सेल्फ स्टार्ट नहीं कर पाते. ऑब्सेशन विथ परफेक्शन, कुछ लोग परफेक्शनिस्ट बन जाते हैं ताकि कहीं से तो अप्रिसिएशन मिल जाए. लोअर रेजिलियंस, रेजिलियंस मतलब दैट एबिलिटी टू बाउंस बैक, इमोशनल रेजिलियंस, मेंटल रेजिलियंस, वो टूट जाता है. लैक ऑफ सेल्फ केयर, अपने बारे में ध्यान नहीं देना, ऐसा एटीट्यूड. स्ट्रगलिंग इन रिलेशनशिप, संबंधों को मैनेज करने में तकलीफ. डिसहार्मनी इन रिलेशनशिप विद सेल्फ में भी डिस्टर्ब हो जाता है. बीइंग ए पीपल प्लीजर, कुछ लोग पीपल प्लीजर बन जाते हैं. चाटुकारिता भी एक कला, हर रिश्ते में चाटना शुरू कर देते हैं कि सोच के चाट के ही वो कोई हमें तारीफ़ कर देंगे. इसलिए नहीं कि वो करना चाहते, इसलिए कि उन्हें लगता है अगर ये मैं कर दूंगा तो लोग मुझे पसंद करेंगे. बिलीविंग यू आर पावरलेस टू चेंज एनीथिंग, जो चीज़ आपके नियंत्रण में है, सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस में भी, उसे भी आप नहीं बदलने चाहते, या ऐसा लगता है कि मैं वो भी नहीं बदल पाऊंगा, इतना कमज़ोर एहसास. सोशल एंग्जाइटी ऑब्लिक सोशल विड्रॉल, एक सोशल सेटअप में लोगों से दूर भागना, कमरे में बंद करके बैठना, अपने आप में साथ बैठना, लोगों के साथ मिक्स होने में प्रॉब्लम. अवॉइडेंस and also leading to procrastination. Now, there are a list of them. We will take one by one and we will also see how to rectify them. So, depending upon आपका response कैसा है और comment कैसा है, we'll take them, because unless these things are fixed, ये आपको affect करेगा हर domain में. So, we need to identify the source of it and try and bridge it up. So, first we'll take negative feeling or emotion, जो कि इसका first point है. Negative feelings oblique emotion. So feeling which makes you miserable oblique sad. नेगेटिव फीलिंग्स या नेगेटिव इमोशन क्या है? ये ऐसे भावनाएं हैं जो आपको अपने अंदर से एक असहायता का फीलिंग देता है या एक दर्द का आभास देता है, उदास रखता है, अंदर ही अंदर ऐसा लगता है मुझे कोई चीज़ खाए जा रहा है. यू डोंट फील कंफर्टेबल विथ योर सेल्फ एंड यू फील दिस समथिंग रॉन्ग विद यू. सो नेगेटिव फीलिंग कॉन्स्टेंटली अगर लगातार रहे तो दैट्स डैमेजिंग. ये फीलिंग, जो नेगेटिव फीलिंग अगर एक्सेसिव हो जाए तो यू स्टार्ट डिसलाइकिंग योर सेल्फ, और बिकॉज आप खुद को नहीं पसंद कर पाते तो उससे आप दूसरों को भी पसंद नहीं कर पाते, बिकॉज दूसरे आपको लगता है कि सब आपके पीछे पड़े हुए, नोबडी अप्रिशिएट्स यू. इट इज़ एक्चुअली सच फीलिंग इवन दो वी कैरी इट फॉर अदर्स, बट एक्चुअली वो प्रॉब्लम हमारे अंदर ही होता है. वी फील कि अदर्स नॉट रेस्पेक्टिंग, बट द प्रॉब्लम इज दैट वी आर नॉट एबल टू रेस्पेक्ट आवरसेल्फ, और ये हमारे नेगेटिव फीलिंग से आता है. अगर कॉन्स्टेंटली नेगेटिव फीलिंग और नेगेटिव इमोशन में रहने से हम अपने आप को डी वैल्यू करना शुरू कर देते हैं, तो नेचुरली उसमें आपका योर एबिलिटी टू कंडक्ट इन ए सोशल इन्वायरमेंट और इन्फ्लुएंस अदर्स will drastically reduce. This kind of a feeling reduce your confidence and self-esteem. Self-esteem के ऊपर ही बात है, तो ये एक नेगेटिव फीड हो जाता है कि इस तरह की कांस्टेंट फीलिंग से हम अपना आत्मविश्वास को भी खो जाते हैं, अनफेमिलियर सिचुएशन में एकदम चटक जाएंगे, एंड वी विल लूज आवर कॉन्फिडेंस, एंड हमारा सेल्फ एस्टीम जहाँ है उससे और नीचे चला जाएगा. ऊपर जाने की बजाय जो है वो भी नीचे जाना शुरू हो जाएगा. सो that needs to be fixed. It reduces the general satisfaction in life. लाइफ में जो एक संतुष्टि होनी चाहिए, एक समरसता होना चाहिए, वो इसको डिस्टर्ब करता है. एक खोखलापन का आभास, अकेलापन का आभास, सब होते हुए भी अकेलापन का आभास. ऐसा लगता है आई एम ए फेलियर, ऐसा लगता है आई हैव नॉट डन जस्टिस टू माई लाइफ, ऐसा लगता है दैट आई वेस्टेड टाइम, ऐसा लगता है दैट मैं कुछ भी हासिल नहीं कर सकता. ये सब हमारी फीलिंग नेगेटिव होता है और वो हमें नीचे खींचता है. नाउ ए वेरी सिंपल थिंग कि मेरा कम्युनिकेशन स्किल वीक है, उसे ठीक नहीं करने के कारण मुझे ये पता है कि मेरा वीक है, मेरा सेल्फ एस्टीम नीचे चला जाएगा और मैं तड़पता रह जाऊंगा कि मैं कुछ अचीव करना चाहता हूँ, कैसे करूँगा. दैट्स बिकॉज आई एम नॉट एबल टू इनिशिएट एन एक्शन बिकॉज ऑफ दिस नेगेटिव फीलिंग एंड सेल्फ लिमिटिंग थॉट्स.
फीलिंग ऑफ एक्सेसिव स्ट्रेस, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस का अनुभव होना और अपने एफिशिएंसी को डिप्लीट कर लेना। स्ट्रेस का मतलब तनाव, क्योंकि ये तनाव बाहरी परिस्थिति से ज़्यादा भीतर की ये सोच है। नेक्स्ट इज फॉर एग्जाम्पल इस टाइप के फीलिंग की बात करें तो हेट, एंगर, जेलसी, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ऑल ऑफ देम जो है फॉल अंडर दीज नेगेटिव फीलिंग्स ऑब्लिक इमोशंस के अंदर में आता है। तो अगर आप ये एक्सेसिवली फील करते हो, प्लीज़ टेक्स्ट मी, व्हाट्सअप मी, एंड वी विल सी हाउ कैन वी एड्रेस दिस इशू। उसके अलावा नेगेटिव फीलिंग्स जो है इट इज़ क्लोजली लिंक टू योर मूड्स, है ना। आपके मूड, आपका सकारात्मक मूड है, नकारात्मक मूड है, चिड़चिड़ापन रहता है, तो आपका जो मानसिक स्थिति है, मूड है, वो आपके थिंकिंग से और आपके फीलिंग से इन्फ्लुएंस होता है। अगर आपका थिंकिंग एंड फीलिंग कंस्ट्रक्टिव है तो यू फील एक्सपीरियंस गुड इमोशंस। उसी जगह में आप कॉन्स्टेंटली उल्टा उल्टा सोचते हो तो वो नेचुरली आपको डिप्लीट करेगा एंड यूल गेट इनटू दैट काइंड ऑफ थिंग। So you as a person may experience a range of negative feelings and emotion if you don't take care of it, और ये आपके emotions को fluctuate करता रहेगा। इसको मूड डिसऑर्डर तक भी ले जा सकता है, जहाँ पे आपका मूड जो है एकदम अल्टी पल्टी मारता रहेगा एंड यू विल डिप्लीट योर एफिशिएंसी एंड योर कैपेबिलिटी टू फंक्शन, है ना। सो सैडनेस, शेम, एंगर, गिल्ट, एंग्जाइटी, फियर, लोनलीनेस, स्ट्रेस एंड डिप्रेशन कैन लीड इवन टू डिप्रेशन। एक्सट्रीम केसेस में सुसाइडल थॉट्स तक आना शुरू हो जाता है अगर आप इसको समय पे कंट्रोल ना करो, और आपको ये लगेगा कि सब आपसे स्मार्ट है और आप कहीं पे कम है। मतलब वो दैट एक नीचे से दीमक की तरह खाता रहता। तो मुझे बताना ये बात जो मैं बोल रहा हूँ, हाउ मेनी यू कैन अंडरस्टैंड इफ समबडी इज एक्सपीरियंसिंग इट, do post it to me either on the comment box or through the WhatsApp and we'll see. Everyone experiences, all of us experience this negative emotion. There is no exception, whether it's me or you. All of us at some stages experience it. The point is to what duration or what period is that experience. If it is prolonged, it's a serious issue. But few person जो है, even though all of us suffer, few persons suffer from low self-esteem and will have difficult time extracting out of it. वो अपने आप को इस लूप से बाहर निकाल नहीं पाएंगे। वो एक सीवियर केस है। सभी को, हमें, मुझे भी होता है, आपको भी होता है। once in a while we will definitely go through that phase, but the point is, the challenge is how fast we can bounce back, how fast we are able to extract, and what is the strategy to extract. Most of us are able to do it, but there are few cases, in fact not few, जो आज का जनरेशन में mental disorders is a common practice. So in many cases people are not able to extract themselves out of this negative spiral, तो वो फंस जाते हैं उसमें। Often we experience a combination of various moods, various emotions, or maybe various frequency में ही आता है। तो if you're sensitive to this, they can say many times our inactivity, किसी चीज़ को पाना चाहते हैं लेकिन उसके लिए जब हम मेहनत नहीं करते, और हमें पता है हम मेहनत नहीं कर रहे और ये भी पता है कि वहाँ पहुँचना, लक्ष्य तक पहुँचना मुश्किल है, फिर भी लक्ष्य तक पहुँचना चाहते हैं, दे ऑल क्रिएट नेगेटिव इमोशंस। तो हम इसके ऊपर बारे में बात करेंगे। तो नेगेटिव इमोशंस को, अगर आपने इस टाइप के इमोशंस को, फीलिंग्स को, आपने लो सेल्फ एस्टीम से ओरिजिनेट वाले को अगर आपने फिक्स नहीं किया, तो व्हेन यू गो टू द SSB इंटरव्यू, डेफिनेटली यू विल नॉट स्टैंड ए चांस। तो आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि इफ़ यू आर सफरिंग फ्रॉम लो सेल्फ एस्टीम, स्ट्रेस हैंडलिंग प्रॉब्लम, लॉट ऑफ देम, आई विल नॉट स्पीक ऑल ऑफ देम इन वन गो, वी विल टेक वन बाय वन। कुल मिला के अगर एक कैंडिडेट इज सफरिंग फ्रॉम लो सेल्फ एस्टीम, आप TAT WAT ठीक करते रह जाओगे, इसे फिक्स नहीं करोगे, तो आप कितना भी अच्छा ड्रेस पहन लो, कोट पैंट पहन लो, अंग्रेजी बोल लो और GR में फट्टा उठा के भाग लो, इट्स नॉट गोइंग टू वर्क। यू हैव टू फिक्स इट, एंड if you train on how to write amazing TAT story, you may end up writing TAT story but your low self esteem will not get corrected. मुझे आप बताना, क्या अमेजिंग TAT लिखने की विधि सीख लो तो लो सेल्फ एस्टीम ठीक हो जाएगा। टिप्स एंड ट्रिक्स टू क्रैक SSB इन फर्स्ट अटेम्प्ट, है ना। 5 days जर्नल सिग्नेचर कोर्स, ब्रांडेड सेल्फ डिस्क्रिप्शन, सुसाइडल टेंडेंसी को हाइड करके ऑफिसर बनने की विधि बताते। नंबर 1 गॉड, है ना। कोर क्वालिटी के वीकनेस को हाइड कर दो, सोशल एडाप्टेबिलिटी, कोऑपरेशन, सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, सुसाइडल टेंडेंसी, लो सेल्फ एस्टीम, पावर ऑफ एक्सप्रेशन प्रॉब्लम, इन सब को गॉड बोलते छुपा दो। इज दैट द राइट वे? नेक्स्ट इज रेस्पॉन्सेस ठीक कर दो, बी पॉजिटिव कर दो,
कैसे बी पॉजिटिव करोगे व्हेन यू आर सफरिंग फ्रॉम लो सेल्फ एस्टीम। ये सब करने से क्या आपका लो सेल्फ एस्टीम का प्रॉब्लम ठीक हो जाएगा, मुझे फीडबैक देके बताना। एंड इफ वन ऑफ यू सफरिंग फ्रॉम दैट, वी आर जस्ट टेकन टुडे नेगेटिव इमोशन, आई वांट टू नो व्हाट इज द एग्जैक्ट एक्शन प्लान टू करेक्ट इट। At SML we have a methodology. In the AFOSOP का जो SML course में we have a methodology to fix all these things. That does not mean कि you will be able to clear the SSB or not. That's a different thing. First thing is to identify it, find out the root, fix it, because it is going to affect you in your life. So I want to know, by writing amazing stories and branded SD लिखने से, क्या SD में बदल देने से क्या आपका सेल्फ एस्टीम प्रॉब्लम ठीक हो जाएगा? सो मुझे फीडबैक जरूर देखना। ये दिस इज माय क्वेश्चन टू यू। ये सब करने से, कोर क्वालिटी छुपाने से, सुसाइड टेंडेंसी को छुपा देने से क्या लो सेल्फ एस्टीम कवर हो जाएगा? तो नहीं होगा। तो SSB जाने से पहले आपको पर्सनालिटी डेवलपमेंट करना पड़ेगा, बिकॉज SSB इज अ पर्सनालिटी बेस्ड सिलेक्शन। एंड पर्सनालिटी डेवलपमेंट करके अगर लो सेल्फ एस्टीम प्रॉब्लम है, इसका कॉज को आइडेंटिफाई करके इसको पहले बदलना पड़ेगा। एंड वंस यू are able to build up your high self-esteem, then of course you should also know what is the SSB का testing tool, GTO for Tabali क्या है, and then when you go there and give your SSB, definitely your performance will enhance, which will increase your probability of success. Nobody can guarantee you success with low self-esteem, so you should anyway not get recommended. So that clarity is required, and इसी clarity को देने के लिए और एक रोड मैप बना के देने के लिए 15 January 2022 Saturday 9 AM onwards we'll have a 2-hour workshop. The topic is right strategy to prepare for the SSB interview. All of you are advised to come and watch it, especially those people who are self preparing. जो लोग कोचिंग में मेरे पास आओगे वो तो anyway we will be doing it, बट जो लोग सेल्फ प्रिपरेशन कर रहे हो या जिनके पास अभी टाइम है, सर्विस एंट्री, NDA लड़के लड़कियां जो लॉन्ग टर्म के लिए कर रहे हैं, जिनके पास 6 महीने 1 साल है, यू विल ट्रमेंडसली बेनिफिट ऑल ऑफ दैट। एंड रजिस्टर करने के लिए यू हैव टू गो टू courses.ganeshbabu.in, एंड इन केस यू विश टू कॉन्टैक्ट मी for any assistance, it is 9090099035. WhatsApp on this and I'll get back to you. So इसके अलावा क्लैरिटी 500% का मैं ऑलवेज वादा करता हूँ दैट यू विल गेट। इसके अलावा जो लोग सर्विस सिलेक्शन बोर्ड नहीं जा रहे बट यू आर सफरिंग फ्रॉम दीज इश्यूज, सेल्फ मैनेजमेंट लीडरशिप विल definitely help you, because the whole funda of self management is leadership is that if you can manage the world inside you, you can manage the world outside you. So आप में से जो भी आपके दोस्त या मित्र या रिलेटिव जिनको लगता है कि they suffer from some of these issues, you're most welcome to inform them about this course. Self management leadership ka 2 weeks courses starts every Monday, and the next batch is starting on 17th January 2022. उसके बाद 24, 31 February, March में 7, 14, 21, 28. So to register 9090099035 is the number on which you do WhatsApp. Similarly, जो लोग SSB का classes करना चाहते हैं सेम ड्यूरेशन में, नेक्स्ट बैच स्टार्टिंग ऑन 17 January, 2 weeks का बैच है, ऑनलाइन ही है। तो 17, 24, 31 जनवरी के फरवरी मार्च में किसी भी मंडे में आप ज्वाइन कर सकते हो। व्हाट्सअप में ऑन द गिवन नंबर 9090099035। I'll get back to you with the details. Hope to see in last number. मुझे बताना है ये लो सेल्फ एस्टीम का सीरीज, is it helping you? Kindly share it with your friends. Subscribe this channel. If you like it, do share it and put your comments. And because your comments will encourage me and also tell me कि इस डोमेन में is it making any sense to you? And मुझे बताना कि negative thoughts के ऊपर जो आज ये वीडियो बनाया है, is it useful or not? And do give me a feedback. Share it with your friends. Thank you and may God bless you. Thank you very much.